सीखा है सिर्फ बातों से, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक अच्छा जरूरी है. It's a famous quotation. Life is an art, give yours in color. Assalamu alaikum, dear viewers, and a very good evening. You are watching special discussion program on IBAN News Network. This is your host Mushtaq Ali Baba. Today in our special live discussion program, we have with us a young calligrapher. Yes, I'm talking about a young calligrapher, Nooran Fatima. Nooran Fatima is a 10th standard student, a very young in age, but she is very famous so far as her calligraphy is concerned. So let me directly go to Nooran Fatima. Welcome Nooran Fatima in IBAN News Network. Thank you so much. It's my pleasure. Nooran, let me directly start. Could you please tell our viewers about your introduction and also about your basic schooling? Yeah, sure. I am Nooran Fatima. I reside at Hassanabad, Ranawali, Srinagar. I'm a class 10 student from Green Valley Educational Institute. I'm 15 and I've recently started calligraphy. Actually, I always loved calligraphy. I was always into art, but I didn't get much time to exhibit it, to perform it and all that. So lockdown proved quite helpful for me. During lockdown, I got a lot of Nooran, time. I request you, please show your face to our viewers. You are not visible to us. So maybe your camera is off, I think so. No, it's No, no, on you are not already. visible. You are not visible to our viewers. So make this correction. I've already switched on the camera. But you are not visible to us. So maybe there may be some technical problem. You are not even visible to me. And how come it's possible you will be visible to our viewers? Wait a minute. Okay, okay. Definitely wait you. You make the correction in your camera. Now it's visible. But it's front camera, I think so. Yeah, yeah. I guess the front camera is visible now. But you are not visible to us. It's front camera working, perhaps. Yeah, front camera is working and I'm facing towards the front camera. But you are not visible to you are. So, dear viewers, so far as our today's guest is concerned, our technical team is trying its best to connect her again. She's a calligrapher. Her age is very young. She's a 10th standard student. But so far as our valley is concerned, so far as our JNKUT is concerned, it's much more talent is here. Whether it may be art, whether it may be culture, whether it may be any other aspect, everyone is here talented. Lot of talent we the people of Kashmir have, but unfortunately we don't have much more avenues. We don't have much more exposure to express ourselves. Perhaps our guest has joined to us. Now you are visible to us. We really apologize for the disruption in the service. Due to some technical issues, we may face sometimes problem. So, It's all okay. Naren, could you please repeat? Am I audible to you? Yes, now you are. Okay. So could you please repeat? There was some disruption in the service. So tell us, what about your basic schooling? I am from Green Valley Educational Institute and I have been doing my schooling from there only. And I'm a class 10 student.
Okay. So my first question: when did you first develop your interest in calligraphy? I was in class 4 at that time, and it was our Urdu teacher who actually, persuaded us to start calligraphy. She made us do calligraphy with the help of pencils actually at first, and then eventually my interest it got developed with years, and now I've started doing it on a larger scale. Dear viewers, let me tell you something about calligraphy. For those viewers who don't know about calligraphy, calligraphy is simply an art of producing decorative handwriting or lettering with a pen or brush. So, Hurayan, my second question is, how long you have been working for this calligraphy? Actually, I've recently started it during lockdown. So it was during lockdown. The lockdown time, I used it in a productive manner. So I started my calligraphy from lockdown. Okay, you go on, you go ahead, you go ahead. Hurayan, you continue, you continue. Okay, so it was during lockdown. The lockdown time it quite proved helpful for me, and then from there I started calligraphy. So this year you have developed your interest in calligraphy. Yes, although I always had it from class 4, as I already told you. But then this year I got time actually to, create things. What is the most interesting calligraphy project you have worked so far? The most interesting one was the green one that you might have seen. Fabi No, Ayala. have you there some calligraphic pictures? Yeah, yeah. Yeah, you can show us. You can show our viewers your most interesting calligraphy which you have made. Uh, is it visible? If it is available there. Yeah, I'm already just showing it. Is it visible? Okay. Now another question. Now up to that stage when you will collect this calligraphy. So another question is there. How do you ensure your calligraphy skill remains sharp? How you make it neat and clean? Um, I always try to. There are two ways of doing it actually. One is the traditional way, which is using columns. Columns are the common columns. They are made up of bamboo usually. So using column is a quite difficult job. Although it seems easy, but it is very difficult using them. One needs to be quite practiced and all that for using columns. So using columns is a very difficult job. Till now, I've been doing it using pencils and acrylic paints. So I've produced my work with. Though you are a young student, tell me how you will make the difference between a calligrapher and also an artist. Uh, for me, calligraphy is something that is quite close to my heart. I do Arabic calligraphy. So Arabic calligraphy, it is something related to our religion, Islam, and it But quite links. most of students, people, they relate this calligraphy with only religion. But there are also other ways. There are also other means to make the calligraphies. So besides this religion, have you made some calligraphies? Yes, of course. Writing names and other things, and calligraphy is not just bound to religion. But me myself, I prefer doing religious calligraphy because ये एक सुकून देता है आपको अंदर से व्हेन यू स्टार्ट डूइंग कैलीग्राफी एंड रिलीजियस कैलीग्राफी एक्चुअली तो आपको एक सुकून मिलता है तो दैट्स व्हाई आई माई सेल्फ प्रेफर रिलीजियस कैलीग्राफी. Okay. So tell us, if someone wants to be a calligrapher, so what Yeah. skills the man or female or a student should have to go for this calligraphy? Even nowadays, we have observed that people, especially females, they are much more diverted towards this calligraphy. So what is the reason behind this? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी डेडिकेटेड. आपको जज्बा होना चाहिए कुछ करने का.
जब तक जज्बा नहीं होगा तब तक इंसान कुछ कर नहीं सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो जज्बा होना चाहिए। सेकंड ऑफ ऑल आपकी जो स्किल्स होती है, एवरीबडी इज टैलेंटेड इन वन और द अदर वे, हर एक के पास अपना अपना टैलेंट होता है अपने हिस्से का। इट्स नॉट लाइक कोई टैलेंटेड होगा और कोई नहीं होगा, एवरीबडी इज टैलेंटेड एज पर मी। सो वन नीड्स टू हैव यू नो अपने टैलेंट को पॉलिश करना चाहिए, आना चाहिए एक को। वन शुड अपना जो टैलेंट है वो दबाए नहीं रखना है, उसको आगे लाना है, बाहर लाना है। तो जब बंदा ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, तभी जाके वो आगे कुछ अच्छा कर सकता है। तो दैट्स एज फार एज आई एम कंसर्न, दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। Okay, so that's your point of view. और एक क्वेश्चन है, materials or equipments, what type of brush, what type of pens one should use for this calligraphy? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कैलीग्राफी को दो टाइप्स की है। एक होती है जो ट्रेडिशनल कैलीग्राफी है, और दूसरी है मॉडर्न कैलीग्राफी। आजकल मॉडर्न कैलीग्राफी भी चल रही है और ट्रेडिशनल कैलीग्राफी भी। मॉडर्न कैलीग्राफी इज एक्चुअली वी यूज पेंसिल्स, we use paint, and in traditional calligraphy all we use is materials like columns and paper, and the special kind of paper comes for calligraphy. It's known as ahar paper. Okay, how you select calligraphy style and media? I you know it happens, it's all dependent on my ideas. If I look at something and I get inspired, so I try to make it in my own way. So how different is your calligraphy as compared to other calligraphists? um, I do a modern style of calligraphy. That means I use acrylics as base, acrylic paints, and I do it using double pencil. So it's quite different from what others do, as for me. Okay, describe the most recent calligraphy projects on which you have worked recently. Yeah, I'll show you one. You are young. Do not be. We can say, yeah. You show us. Yeah, is it visible? Yeah, it's yeah. This is a calligraphy. Yes. Yes. So recently you have worked on it. Yeah, it has been done on canvas. Be cool. Do not be afraid. Yes. You are young student. So just you are interacting with your teacher, with your, so don't be afraid. You go ahead. No, no, So I'm not. recently you have made this calligraphy. Yes, and I made it on canvas. It is my first canvas calligraphy. Okay. After you are making some calligraphy, are you selling these calligraphic pictures? Not now. Not yet, actually. It is like my parents, they first of all didn't support me in selling and all that. They say that you're quite young for all these things. You they are all like, you should first of all concentrate on your studies, because it's my class 10, so हर साइड से कितना प्रेशर ही होता है 10th क्लास में कि बोर्ड एग्जाम है, कर दिखाना है कुछ। सो प्रेशर है तो उस। तो मुझे बताइए, स्टडीज कितने इफेक्ट होते हैं अगर किसी के पास ये टैलेंट है कैलीग्राफी का? हाउ स्टडीज इज इम्पैक्टेड? देखिए, दो चीज़ें हैं, आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करनी आनी चाहिए। एक तो आपको अलग से जैसे मैं हूँ अभी, मतलब बहुत टाइट शेड्यूल है, एक तो मतलब सेल्फ स्टडी भी करनी होती है, ट्यूशंस भी जाने होते हैं, बहुत मतलब टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इट इज़ लाइक आई हैव केप्ट एन आवर, मतलब दिन में 1 घंटा रखा है मैंने शाम को, जिसमें मैं मतलब ये सब कुछ कर लेती हूँ। बाकी टाइम जो है वो फिलहाल मैं स्टडीज की ओर डेडिकेट कर रही हूँ। ऐसा नहीं करना है कि मतलब यू विल पुट ऑल ऑफ योर टाइम इन कैलीग्राफी एंड ऑल दैट इन योर टैलेंट। No, you have to balance all other things as well. अच्छा, आप कैलीग्राफिक स्टाइल को कैसे चूज करते हो? हाउ यू चूज योर कैलीग्राफिक स्टाइल? कैलीग्राफी स्टाइल मेरा कोई पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है।
तो बट यूजुअली जो मेरा फॉन्ट स्टाइल है कैलीग्राफी में, अरबिक कैलीग्राफी में, इट्स सुलुत। अच्छा, जो कुछ भी आप कैलीग्राफिक इमेज आपने बनाए हैं, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम देम? मतलब आई शो यू माई फर्स्ट पीस एंड देन आई शो यू माई लास्ट पीस, एंड इट्स क्लियरली विजिबल कि मतलब कितना बंदा इम्प्रूव करता है। जब बंदा ट्राई करता है तो कितना बंदा इम्प्रूव करता है। इसका मुझे दिखाया कि कैलीग्राफी से ही मैंने सीखा है कि मतलब फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक जाने में मतलब अच्छा खासा टाइम लगता है, एंड इट इज लाइक स्टेप बाय स्टेप बंदा इम्प्रूव करता है आगे 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 चलते चलते। व्हाट्स योर एम इन लाइफ टू बी? क्या बनना चाहते हो? आई वॉन्ट टू बिकम एन एरोनॉटिकल इंजीनियर, एंड साथ साथ में मैं IAS भी क्वालिफाई करना चाहती हूँ। रिपीट कीजिए, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ? क्या बनना मैंने चाहते हो आप? मैं बोल रहा आई हूं, सेड क्या बनना चाहते हो आप? जी आई सेड दैट IAS भी मैं क्वालिफाई करना चाहती हूँ। सो यू वांट टू बी एन आईएएस? IAS ऑफिसर, यस। तो क्या ये कैलीग्राफी आपकी हॉबी है? हाँ, इट्स माई हॉबी। ओके। इस कैलीग्राफी को बनाने के लिए देयर शुड बी रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। तो जो फंडिंग है, सोर्स ऑफ फंडिंग है इस कैलीग्राफी के लिए, वो किसने आपको? ऑब्वियसली पेरेंटों ने आपकी, ऑफ कोर्स। या ऑफ कोर्स अब माय कोई पेरेंट्स। शख्स ऐसा है जिसके पास ये फंडिंग नहीं है? हाउ डिफिकल्ट, कितना एक उसको रिक्वायरमेंट है कि कोई कैलीग्राफिक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स उसको चाहिए? कैलीग्राफी के लिए सबसे पहले तो पेपर होना चाहिए, एंड इट्स वो क्वाइट वो अवेलेबल हो ही जाता है पेपर। एंड अदर थिंग जो ये कलम पेपर है, क्या ये ऑर्डिनरी पेपर होता है या इट इज समथिंग डिफरेंट? दो टाइप्स है। जो हम लोग कलम से कैलीग्राफी करते हैं वो हम ऑर्डिनरी पेपर पे नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग पेपर आता है, उसे आहार पेपर कहते हैं, एंड दैट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो जो ऑर्डिनरी पेपर है उस पे बंदा अगर पेंट वगैरह यूज करके कर सकता है, तो पेंट्स वगैरह भी दर क्वाइट एक्सपेंसिव, बट टैलेंट के लिए करना पड़ता है। अच्छा, इस कैलीग्राफी को सीखने के लिए हैव यू कंसल्टेड एनी टीचर, एनी ट्यूटर? क्या ये जरूरी है कि किसी फनकार के पास, किसी आर्टिस्ट के पास आप जाएं? इज इट मैंडेटरी, और ये सेल्फ मेड आपने खुद बनाए? नो नो, आई एम अ सेल्फ टॉट कैलीग्राफर, मैंने खुद ही सीखा है। एक्चुअली व्हेन आई वाज इन क्लास 4, हमारी एक टीचर थी, उर्दू टीचर। उन्होंने हमें पेंसिल से कैलीग्राफी करना सिखाया। लाइक वो पेंसिल को निब बनाती थी, फिर कहती थी कि आप लोग कैलीग्राफी करो, कैलीग्राफी में लिखो। तो तब से मैंने फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया कि फिर तभी से मतलब एक तो उनकी गाइडेंस थी पहले क्लास 4 में, उसके बाद फिर 5th क्लास 6th क्लास, और आगे आगे बढ़ के फिर बंदा हो ही जाता है इम्प्रूव जब बंदा इंटरेस्ट लेता है किसी चीज में। सो आपका मानना यही है कि इस साल मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, ड्यू टू दिस कोविड-19 आई गॉट सम टाइम एंड मैंने इस टाइम को यूटिलाइज किया, नाउ आई एम मेकिंग दिस कैलीग्राफीज। यस एग्जैक्टली, मुझे उस लॉकडाउन टीचर की का वजह से नाम भी काफी बताइए जिसने आपको फोर्थ, अगर उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है, सो यू मस्ट आस्क हर नेम, हर और हिज नेम। शाहीन मैम, her name was Shaheen ma'am, and she is no तो longer in our school, and I don't know where is she currently, but I'm quite thankful to her. बट लेकिन आप इस वक्त ये कह सकते हो, शी हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू टीच, टू Yeah, टॉट यू दिस yes, कैलीग्राफी। exactly. ओके। एक क्या कौन सी डिफिकल्टीज आपने पहले पहले फेस की इस कैलीग्राफी को बनाने के लिए? पहले पहले मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था, एंड इट वाज लॉकडाउन, तो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट मटेरियल का अवेलेबल करना। पहले मैं बहुत टाइम तक ऐसी मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे जो अवेलेबल मटेरियल था उन्हीं से मैंने मतलब कोशिश की बनाने की। उसके बाद फिर इवन ऐसे तो बाहर जाते ही नहीं थे। इट वाज क्वाइट बहुत ये कोविड का डर था, तो बाहर जाते नहीं थे ऐसे शॉपिंग वगैरह के लिए, तो मटेरियल नहीं मिलता था। बट देन मैंने अमेजोन वगैरह से फिर ऑनलाइन खरीदा, मगर उसमें भी बहुत टाइम लगा क्योंकि स्टार्टिंग में डिलीवरी अवेलेबल नहीं थी श्रीनगर, ड्यू टू दिस पैंडेमिक। फिर आगे जाकर होगी, तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम नहीं हुई। दिस वाज द अच्छा ओनली नूरैन फातिमा, और एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, सिंपल थिंग। क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, इस कैलीग्राफी में फीमेल्स क्यों ज्यादा दौड़ रहे हैं? हमने ये देखा है स्पेशली फीमेल ज्यादा इस कैलीग्राफी की ओर बढ़ रहे हैं, इस आर्ट की ओर बढ़ रहे हैं। एंड सो फार एज अवर मेल स्टूडेंट्स आर कंसर्न्ड, दे शो लैक ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स दिस।
सो इसमें क्या फन है आपकी? व्हाट्स योर परसेप्शन? आई डोंट नो एक्चुअली, मुझे नहीं पता कैसे क्यों फीमेल्स ये, बट देन मैंने बहुत सारे मेल्स भी देखे हैं जो हु आर इनटू कैलीग्राफी एंड इनटू आर्ट आल्सो। अच्छा, आप बताइए व्हाट व्हाट चैलेंजेस यू हैव फेस्ड टू मेक एनी, कौन सा प्रोजेक्ट अभी तक रहा है जिसमें आपको ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? एक आई विल शो यू दैट वन। ये आपको दिख रहा है? सो दिस इज आल्सो ए कैलीग्राफी। तो इस कैलीग्राफी यस। को बनाने में आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जी। अच्छा, इस कैलीग्राफी पिक्चर को, इमेज को बनाने के लिए आपके पास हाउ मच टाइम इट कंज्यूम्ड फॉर यू? जो ये वाला था इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा। एक्चुअली पेपर को जो है वो मैं एंटीक लुक देती हूँ एंड इट टेक्स क्वाइट लॉट ऑफ टाइम, मतलब 2 हफ्ते लग ही जाते हैं। अच्छा, ये जो कैलीग्राफी, ये एक आर्टिस्ट है, इस आर्ट को पाने के क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू गेट दिस आर्ट, इन ऑर्डर टू लर्न दिस आर्ट, आपके पेरेंट्स का कितना शौक था, कितना कॉपरेशन था आपके पेरेंट्स का? पहले पहले जब मैंने कहा था कि मतलब मेरा इंटरेस्ट हो रहा है कैलीग्राफी में, मैं करना चाहती हूँ, एंड इनफैक्ट जब ऑर्डर्स आने लगे ना, मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज है मेरा, उस पे जब, और लिटरली मुझे 5-6 ऑर्डर्स आए स्टार्टिंग में ही जब मैंने पोस्ट करना शुरू किया। एट दैट टाइम मेरे पेरेंट्स वर लाइक, इस चीज से आप खराब ही हो जाओगी, रहने दो, इट विल इम्पैक्ट योर स्टडीज, फिर पढ़ोगी वढ़ोगी कुछ नहीं, इसी के साथ हो जाओगी। तो पहले पहले स्टार्टिंग में मेरे पेरेंट्स दे वर नॉट विद इट, बट देन विद टाइम जब मुझे एक्नॉलेज किया गया उसके बाद माय पेरेंट्स वर लाइक, दे वर लाइक यस यू शुड गो ऑन विद इट। मगर वैसे भी नहीं कि आपकी स्टडीज को इम्पैक्ट करे, पहले पहले सपोर्ट नहीं किया। और मेरी फ्रेंड जो है उसने सबसे ज्यादा सपोर्ट दिखाया मुझे इस चीज में, क्योंकि एक्चुअली जो मैं थी, आई एम क्वाइट काहिल हूँ मैं एक्चुअली। आई I'm not, that active person जो करेगा, जिसको guts होंगे चलो मैं करूंगा ये वो। But then my friend was there, her name is Fazilat. She always supported me. She was like करो करो करो, and then one day I just started just because of her, because she supported me. यू आर टॉकिंग अबाउट योर मदर? No, my friend. अच्छा, ओके, योर फ्रेंड। सो आपके पेरेंट्स, आपके डैड क्या करते हैं? व्हाट अबाउट देयर प्रोफेशन? My father is a businessman. Okay, so tell me, any is it important that if somebody wants to be a calligrapher, is it necessary to go for a training, to go for some counseling, to नहीं consult नहीं, some teacher? नो नो, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी, बंदा खुद भी सीख सकता है अगर आप में आजकल तो यूट्यूब वगैरह भी है, बंदा उससे भी सीख सकता है। तो जरूरी नहीं है कि बंदे को गाइडेंस की जरूरत हो। हाँ, गाइडेंस की जरूरत होती है स्टार्टिंग में, यू ऑलवेज नीड अ मेंटर, यू ऑलवेज नीड समबडी जो आपको मतलब सिखाए। तो बट नेसेसरी नहीं है आज के जमाने में, बिकॉज वी हैव इंटरनेट, इंटरनेट पे अब क्या नहीं है, तो इंटरनेट से भी बंदा सीख सकता है। आप बताइए, you are a young energetic female, only 10th standard student. First of all, you are requested to please visible yourself. Again, your camera is not in a proper way, so you are still not visible to our viewers. Again, there is some problem. Huren, am I audible to you? Nuren? Yes, yes, you are, and I think I am You, visible because I've but switched no, on no, the you are not. camera. You are not visible to our viewers. Some technical problem is also there, so no issue for that. Okay, one more question is there. What skills do one need government को, हम especially the government of Jammu and Kashmir UT? What will be your special message? My message would be that जो प्लेटफॉर्म्स है, आई रिक्वेस्ट देम कि जो प्लेटफॉर्म्स है वो बढ़े, क्योंकि हमारे पास बहुत कम प्लेटफॉर्म्स है। हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम प्लेटफॉर्म्स है। एग्जीबिशंस वगैरह वो भी कैलीग्राफी के जो होते हैं स्पेशली, वो बहुत कम होते हैं। इनफैक्ट जो बाकी आर्ट है, जो कैलीग्राफी, इट्स अ सैक्रेड आर्ट, अ रिलीजियस आर्ट। तो इसके लिए जो मतलब
एक तो वर्कशॉप्स वगैरह होनी चाहिए, बाकी एग्जीबिशंस वगैरह वो भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए।